Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are hale and hearty. In today's video lecture, we would be discussing about genomics and pharmacogenomics. Let's first begin with the definitions of the two. So, how we define genomics? Genomics is the study of complete genome of an organism, whereas pharmacogenomics, sometimes called pharmacogenetics, is a field of research that studies how a person's genes affect how he or she responds to medications. Its long-term goal is to help doctors select the drugs and doses best suited for each person. जीनोमिक्स कंप्लीट जीनोम की स्टडी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट जीनोम की स्टडी को जीनोमिक्स कहते हैं, जबकि फार्माकोजेनोमिक्स, जिसको हम फार्माकोजेनेटिक्स भी कहते हैं, एक फील्ड है रिसर्च की जिसमें ये स्टडी की जाती है कि कोई भी इंडिविजुअल, उसकी जीन्स किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं मेडिकेशंस के रिस्पॉन्स पे। ये लॉन्ग टर्म गोल है ताकि डॉक्टर्स को हेल्प की जा सके इन द सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड डोजेस विच आर बेस्ट सुटेबल फॉर ईच पर्सन. So what are the key points? There is another term which is called as proteomics that is associated with genomics that we will be discussing in the next video. Is a branch of molecular biology that studies the set of proteins expressed by the genome of an organism. So the key point is every cell in an individual organism has the same set of genes, but the set of proteins produced in different tissues differ from one another and are dependent on gene expression. Let's discuss genomics in detail. The study of nucleic acids began with the discovery of DNA, progressed to the study of genes and small fragments, and has now exploded to the field of genomics. Genomics is the study of entire genomes, including the complete set of genes, their nucleotide sequence and organization, and their interaction within a species and with other species. The advances in genomics have been made possible by DNA sequencing technology, just as information technology has led to Google Maps that enable us to get detailed information about locations around the globe. Genomic information is used to create similar maps of the DNA of different organisms. न्यूक्लिक एसिड्स की स्टडी बिगिन हुई थी विद डिस्कवरी ऑफ डीएनए, और इसने प्रोग्रेस किया थ्रू द स्टडी ऑफ जीन्स और स्मॉल फ्रेगमेंट्स को, और जो अब जीनोमिक्स की फील्ड कहलाती है. जीनोमिक्स इंटायर जीनोम की स्टडी है जिसमें कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स को स्टडी किया जाता है, उनके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस और ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया जाता है, और इंटरेक्शंस जो विद इन अ स्पीशी एग्जिस्ट करते हैं या फिर अदर स्पीशीज़ के साथ एग्जिस्ट करते हैं, उनको स्टडी किया जाता है. एडवांसेस जीनोमिक्स में पॉसिबल हुई बाय डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी की वजह से. जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने गूगल मैप्स के थ्रू हमें ये हेल्प प्रोवाइड की है कि एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट लोकेशंस अराउंड द ग्लोब. इसी तरह के से जीनोमिक इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जा सकता है टू क्रिएट सिमिलर मैप्स, जो कि डीएनए में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट लोकेशंस प्रोवाइड करते हैं फॉर डिफरेंट जीन्स. सो हाउ वी कैन मैप जीनोम्स? Genome mapping is the process of finding the location of genes on each chromosome. The maps that are created are comparable to the maps that we use to navigate streets. A genetic map is an illustration that lists gene and their location on a chromosome.
Genetic maps provide a big picture similar to a map of interstate highways, and use of genetic markers similar to landmarks. A genetic marker is a gene or a sequence on chromosome that shows genetic linkage with a trait of interest. The genetic marker tends to be inherited with gene of interest, and one measure of distance between them is the recombination frequency during meiosis. Early genetics called this linkage analysis. जीनोम मैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जीन्स की लोकेशन को फाइंड करना एक क्रोमोसोम के ऊपर आसान है। मैप्स क्रिएट किए जाते हैं जीन्स के ऊपर, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम मैप्स को यूज़ करते हैं टू नेविगेट स्ट्रीट्स। एक जेनेटिक मैप एक्चुअली इलस्ट्रेशन होता है जो जीन्स को लिस्ट करता है और उनकी लोकेशन को लिस्ट करता है ऑन क्रोमोसोम। जेनेटिक मैप्स एक बिग पिक्चर प्रोवाइड करते हैं जिस तरह से मैप इंटरस्टेट हाईवेज के मैप्स प्रोवाइड करते हैं, और जेनेटिक मार्कर्स बिल्कुल लैंडमार्क्स की तरह यूज़ होते हैं जेनेटिक मैप्स में। जेनेटिक मार्कर एक ऐसी जीन होती है या सीक्वेंस होता है क्रोमोसोम में जो जेनेटिक लिंकेज शो करता है विद द ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट। जेनेटिक मार्कर्स इनहेरिटेड होते हैं विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, और कोई भी मेजर कर सकता है डिस्टेंस बिटवीन देम जो कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को शो करता है ड्यूरिंग मियोसिस। अर्ली जेनेटिस्ट इस तरह की लिंकेज को लिंकेज एनालिसिस कहते थे। फिजिकल maps get into the intimate details of smaller regions of the chromosome similar to a detailed road map. A physical map is a representation of the physical distance in nucleotides between genes or genetic markers. Both genetic linkage maps and physical maps are required to build a complete picture of the genome. Having a complete map of the genome makes it easier for researchers to study individual genes. Human genome maps help researchers in their efforts to identify human disease-causing genes related to illnesses such as cancer, heart diseases, and cystic fibrosis, to name a few. In addition, genome mapping can be used to help identify organisms with beneficial traits, such as microbes with the ability to clean up pollutants or even prevent pollution. Research involving plant genome mapping may lead to methods that produce higher crop yields or to the development of plants that adapt better to climate changes. Physical maps इंटीमेट डिटेल्स शो करते हैं स्मॉलर रीजन्स की क्रोमोसोम्स के ऊपर। और फिज़िकल मैप एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन होता है फिज़िकल डिस्टेंस का न्यूक्लियोटाइड्स में बिटवीन जीन्स एंड जेनेटिक मार्कर्स। दोनों जेनेटिक लिंकेज मैप्स और फिज़िकल मैप्स रिक्वायर्ड होते हैं टू बिल्ड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द जीनोम। एक कंप्लीट मैप जीनोम का ये आसानी पैदा करता है रिसर्चर्स के लिए कि इंडिविजुअल जीन्स को स्टडी किया जा सके। ह्यूमन जीनोम मैप्स रिसर्चर को हेल्प करती हैं टू आइडेंटिफाई ह्यूमन डिजीज़ कॉजिंग जीन्स जो कि इलनेस के साथ एसोसिएटेड हैं, लाइक कैंसर, हार्ट डिजीज़ या सिस्टिक फाइब्रोसिस। जीनोम मैपिंग को हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जिनके बेनिफिशियल ट्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो पॉल्यूटेंट्स को क्लीन अप कर देते हैं और पॉल्यूशन को प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा प्लांट जीनोम मैपिंग में ऐसे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि हाई क्रॉप यील्ड्स अटेन की जा सकें या ऐसे प्लांट्स डेवलप किए जा सकें जो बेटर क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट कर सकें।
So this is a physical map of the human X chromosome, which shows different regions on chromosomes. Here you can see that there are different regions which shows different deficiency or diseases. Genetic maps provide the outline and physical maps provide the details. It is easy to understand why both types of genome mapping techniques are important to show the big picture. Information obtained from each technique is used in combination to study the genome. Genome mapping is used with different model organisms that are used for research. Genome mapping is still an ongoing process, and as more advanced techniques are developed, more advances are expected. Genome mapping is similar to completing a complicated puzzle using every piece of available data. Mapping information generated in laboratories all over the world is entered into the central databases such as the National Center for Biotechnology Information. Efforts are made to make the information more easily accessible to researchers and the general public. जेनेटिक मैप्स एक आउटलाइन प्रोवाइड करते हैं और फिज़िकल मैप्स डिटेल प्रोवाइड करते हैं। ये आसानी होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि दोनों टाइप्स जीनोम मैपिंग टेक्निक की इम्पॉर्टेंट हैं टू शो द बिग पिक्चर। इंफॉर्मेशन जो ऑब्टेन की जाती है हर एक टेक्निक से, चाहे वो जेनेटिक मैप की हो या फिज़िकल मैप की हो, वो कम्बिनेशन में यूज़ की जाती है टू स्टडी द जीनोम। जीनोम मैपिंग को यूज़ किया जाता है विद डिफरेंट मॉडल ऑर्गेनिजम्स जो कि रिसर्च में यूज़ होते हैं। जीनोम मैपिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स डेवलप की जाती हैं या मोर एडवांसेस एक्सपेक्ट की जा सकती हैं इस मैपिंग प्रोसेस से। Genome mapping actually similar है to completing a complicated puzzle using every piece of available data. Mapping information जो laboratories में generate होती है all around the world, वो enter होती है into a central database जैसे कि National Center for Biotechnology Information का database है और ये information easily accessible है for researchers and general public. Just as we use global positioning systems instead of paper maps to navigate through roadways, NCBI allows us to use a genome viewer tool to simplify the data mining processes. Applying genomics. The most commonly known application of genomics is to understand and find cures for diseases. Predicting disease risk at the individual level. Predicting the risk of disease involves screening and identifying currently healthy individuals by a genome analysis at the individual level, and intervention with lifestyle changes and drugs can be recommended before disease onset. However, this approach is most applicable when the problem arises from a single gene mutation. Such defects only account for about 5% of the diseases found in developed countries. Most of the common diseases such as heart disease or multifactorial or polygenic, which refers to a phenotypic characteristic that is characterized by two or more genes, and also environmental factors such as diet. Genome-wide association studies. Since 2005, it has been possible to conduct a type of study called a genome-wide association study or GWAS. A genome-wide association study is a method that identifies differences between individuals in single nucleotide polymorphism that may be involved in causing diseases. The method is particularly suited to diseases that may be affected by one or many genetic changes throughout the genome. It is very difficult to identify the genes involved in such a disease using family history information. The genome-wide association studies methods relies on a genetic database
that has been in development since 2002 called the International HapMap Project. The HapMap project sequenced the genome of several hundred individuals from around the world and identified a group of SNPs. The group include SNPs that are located near or to each other on chromosomes, so they tend to stay together through recombination. Um, the fact that the group stays together means that identifying one marker SNP is all that is needed to identify all the SNPs in the group. There are several million SNPs identified, but identifying them in other individuals who have not had their complete genome sequence is much easier because only the marker SNPs needed to be identified. In common design for genome-wide association studies, two groups of individuals are chosen. One group has the disease and the other group does not. The individuals in each group are matched in other characteristics to reduce the effect of confounding variables causing differences between the two groups. For example, the genotypes may differ because the two groups are mostly taken from different parts of the world. Once the individuals are chosen, typically their numbers are 1,000 or more for the study to work. Samples of the DNA are obtained. The DNA is analyzed using automated systems to identify large differences in percentage of particular SNPs between the groups. Often the study examines a million or more SNPs in the DNA. Most commonly known application genomics key is to understand and find cure of diseases. First is disease risk को predict करना at individual level. Risk of diseases को predict करना involve करता है screening को और identification को. Currently healthy individual में ये स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन की जाती है बाय जीनोम एनालिसिस इंडिविजुअल लेवल के ऊपर और इंटरवेंशंस की जाती हैं विद लाइफस्टाइल चेंजेस एंड ड्रग्स डिजीज़ स्टार्ट होने से पहले या ऑनसेट का डिजीज़ होने से पहले. ये अप्रोच मोस्ट एप्लीकेबल है जब प्रॉब्लम अराइज होती है फ्रॉम अ सिंगल जीन म्यूटेशन, लेकिन वो डिफेक्ट्स सिर्फ ओनली अकाउंट करते हैं 5% ऑफ डिजीज़ को जो कि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर हैं, उस सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से हो रही है. जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं लाइक हार्ट डिजीज़ ये मल्टीफैक्टोरियल होती हैं और पॉलीजेनिक होती हैं, यानी कि फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रेफर करती है दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय 2 और मोर जीन्स, और इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स और डाइट भी इन्वॉल्व होती है. देयर इज़ अनदर एप्लीकेशन जिसको हम जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़ कहते हैं. 2005 से ये पॉसिबल हुआ कि एक टाइप ऑफ स्टडी कंडक्ट की जाए जिसे जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी कहा जाता है या GWS कहा जाता है. GWS या जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़ एक मेथड है जो आइडेंटिफाई करता है डिफरेंसेस को बिटवीन इंडिविजुअल एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म में या SNPs में जो कि इन्वॉल्व होते हैं डिजीज़ कॉज करने के लिए. ये मेथड पर्टिकुलरली सूटेड है उन डिजीज़ के लिए जो कि अफेक्ट कर सकती हैं हो सकती हैं बाय वन और मैनी जेनेटिक चेंजेस थ्रू आउट द जीनोम. ये डिफ़िकल्ट होता है कि जीन्स को आइडेंटिफाई किया जाए इन सच अ डिजीज़ यूजिंग फैमिली हिस्ट्री इंफॉर्मेशन. जीनोम वाइड एसोसिएशन मेथड रिलाई करता है जेनेटिक डेटाबेस के ऊपर जो कि डेवलपमेंट में है सिंस 2002 एंड इट इज़ कॉल्ड एज द इंटरनेशनल हैपमैप प्रोजेक्ट. ये हैपमैप प्रोजेक्ट सीक्वेंस करता है जीनोम्स को several hundred individuals के from around the world and they have identified groups of SNPs जो कि single nucleotide polymorphs हैं involved in causing the disease. The groups include SNPs जो कि located हैं near to each other on chromosomes, so they tend to stay together through recombination. फैक्ट ये है कि ग्रुप्स
stays together. मतलब ये कि you can identify one marker SNP is all that is needed to identify all the SNPs in the group. Several million SNPs आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन आइडेंटिफाई करना उन्हें इंडिविजुअल्स में जिनके अंदर कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस नहीं हुआ हुआ, ये ज़्यादा ईजी होता है बिकॉज ओनली दी मार्कर SNPs इज नीडेड टू बी आइडेंटिफाइड. कॉमन डिज़ाइन जो GWS का है वो ये इन्वॉल्व करता है कि दो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिए जाते हैं. एक ग्रुप ऐसा होता है जिसमें डिजीज़ होती है और दूसरा ग्रुप ऐसा होता है जिसमें डिजीज़ नहीं होती. इंडिविजुअल्स दोनों ग्रुप्स के मैच किए जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ताकि कंफाउंडिंग वेरिएबल्स के इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सके, causing differences between two groups. For example, the genotypes may differ because the two groups are mostly taken from different parts of the world. Individuals को चूज़ किया जाता है जैसे typically their numbers are 1,000 or more for a study to work, and samples of their DNA are obtained. DNA को analyze किया जाता है using automated systems to identify large differences in the percentage of particular SNPs between the two groups. Often the study examines a million or more SNPs in the DNA. The results of GWAS or genome-wide association studies can be used in two ways. The genetic differences may be used as markers for susceptibility to the disease in undiagnosed individuals, and the particular genes identified can be targets for research into the molecular pathway of the disease and potential therapies. An offshoot of the discovery of gene association with disease has been the formation of companies that provide so-called personal genomics that will identify risk levels for various diseases based on an individual's SNP complement. The science behind these services is controversial because genome-wide association studies looks for associations between genes and disease. These studies provide data for other research into causes rather than answering specific questions themselves. An association between a gene difference and a disease does not necessarily mean there is a cause and effect relationship. However, some studies have provided useful information about the genetic causes of the disease. जीनोम-वाइड एसोसिएशन स्टडीज़ के रिज़ल्ट को दो तरह से यूज़ किया जा सकता है. जेनेटिक रेफरेंस से यूज़ किया जा सकता है एज मार्कर्स फॉर ससेप्टेबिलिटी टू डिजीजेज इन अनडायग्नोज्ड इंडिविजुअल्स, और पर्टिकुलर जीन्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है जो कि टारगेट हो सकती है फॉर रिसर्च का इनटू मॉलिकुलर पाथवेज ऑफ द डिजीज़ एंड पोटेंशियल थेरेपीज़. ये ऑफशूट है फॉर द डिस्कवरी ऑफ जीन एसोसिएशंस विद डिजीजेज, जो कि पर्सनल जीनोमिक्स प्रोवाइड करती हैं, जो आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क लेवल्स वेरियस डिजीज़ के बेस्ड ऑन इंडिविजुअल SNPs कॉम्प्लीमेंट. ये साइंस इसके पीछे कंट्रोवर्शियल है बिकॉज जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़ लुक फॉर एसोसिएशन बिटवीन जीन एंड डिजीज़, और ये स्टडीज़ डेटा प्रोवाइड करती हैं फॉर अदर रिसर्च इनटू कॉजेज़ rather than answering specific questions themselves. Association जो जीन डिफरेंसेस के बीच में एग्जिस्ट करती है और डिजीज़ के बीच में एग्जिस्ट करती है, वो ये ज़रूरी नहीं होता कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करे. इसीलिए कुछ स्टडीज़ यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं जेनेटिक कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ के लिए. Moving further to the next topic, that is pharmacogenomics. Pharmacogenomics involves evaluating the effectiveness and safety of the drug on the basis of information from an individual's genomic sequence. Personal genome sequence information can be used to prescribe medications that will be most effective and least toxic on the basis of individual patient genotype. Studying changes in gene expression could provide information about the gene transcription profile in the presence of the drug.
which can be used as an early indicator of the potential or for toxic effects. For example, genes involved in cellular growth and controlled cell death, when distributed, could lead to the growth of cancerous cells. Genome-wide studies can also help to find new genes involved in drug toxicity. The gene's signature may not be completely accurate but can be tested further before pathologic symptoms arise. फार्माकोजेनोमिक इन्वॉल्व करता है इफेक्टिवनेस और सेफ्टी ऑफ ड्रग की वैल्यूएशन को इंडिविजुअल जीनोम सीक्वेंस की बेसिस के ऊपर। पर्सनल जीनोम सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जा सकता है टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस जो कि ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं और लीस्ट टॉक्सिक हो सकती हैं बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पेशेंट जीनोटाइप। जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस की स्टडी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट जीन ट्रांसक्रिप्शन प्रोफाइल किसी भी ड्रग की प्रेजेंस में, और इसे इस्तेमाल किया जा सकता है एज एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ द पोटेंशियल और टॉक्सिक इफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल जीन्स जो कि सेलुलर ग्रोथ में इन्वॉल्व हैं या फिर कंट्रोल्ड सेल डेथ में इन्वॉल्व हैं, अगर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो इट कैन लीड टू ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल्स। Genome-wide studies can also help to find new genes involved in drug toxicity. Gene signatures completely accurate नहीं होते, but they can be tested further before pathological symptoms arise. There is another technique which is called as metagenomics. Traditionally, microbiology has been taught with the view that microorganisms are best studied under pure culture conditions, which involves isolating a single type of cell and culturing it in the laboratory. Because microorganisms can go through several generations in a matter of hours, their gene expression profiles adapt to the new laboratory environment very quickly. On the other hand, many species resist being cultured in isolation. Most microorganisms do not live as isolated entities but in microbial communities known as biofilms. For all these reasons, pure culture is not always the best way to study microorganisms. Metagenomics is the study of the collective genomes of multiple species that grow and interact in an environmental niche. Metagenomics can be used to identify new species more rapidly and to analyze the effect of pollutants on the environment. Metagenomic technique can now also be applied to communities of high eukaryotes such as fish. Here in this figure you can see that metagenomics involves isolating the DNA from multiple species within an environmental niche. Each color represents DNA from a different species. The DNA is cut up and sequenced, allowing entire genome sequence of multiple species to be restructured from the sequence of overlapping species, and all the genomic DNA from the particular environment is cut into fragments and ligated into a cloning vector. The fragments are sequenced and regions of overlap are used to determine the genomic sequence. ट्रेडिशनली माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है अंडर प्योर कल्चर कंडीशंस, जो एक सिंगल टाइप ऑफ सेल को आइसोलेट करते हैं, उसकी कल्चर करते हैं लेबॉर्ट्री में। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सेवरल जनरेशन्स में ग्रो कर सकते हैं इन आवर्स, उनकी जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स को अडॉप्ट किया जाता है टू द न्यू लेबॉर्ट्री इन्वायरमेंट वेरी क्विकली। जबकि बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो रेजिस्ट करती हैं कल्चर एनवायरनमेंट में या फिर आइसोलेशन में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइसोलेटेड एंटिटीज़ में, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइसोलेटेड एंटिटीज़ में ज़िंदा नहीं रहते, बल्कि
माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ में एग्जिस्ट करते हैं जो कि बायोफिल्म्स कहलाती हैं। इसीलिए इन्हीं रीजंस की वजह से प्योर कल्चर इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट वे टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेटाजीनोमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें कलेक्टिव जीनोम्स स्टडी की जाती है मल्टीपल स्पीशीज़ की जो ग्रो और इंटरैक्ट करते हैं एक ही इन्वायरमेंटल निश में। मेटाजीनोमिक्स को यूज़ किया जा सकता है टू आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़ मोर रैपिडली, और इसे यूज़ किया जा सकता है इन ऑर्डर टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन द एनवायरनमेंट। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि मेटाजेनोमिक्स इन्वॉल्व करता है डीएनए के आइसोलेशन को डिफरेंट मल्टीपल स्पीशीज़ में फ्रॉम एनवायरमेंटल निच, और ये तमाम जीनोमिक डीएनए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में कट होता है और फ्रेगमेंट होता है और लाइगेट होता है इनटू क्लोनिंग वेक्टर, और इन फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस किया जाता है और रीजन्स ऑफ ओवरलैप को यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द जीनोमिक सीक्वेंस। Metagenomic technique can also be applied to communities of higher eukaryotes such as fish. So that's all from today's video lecture. In next video, we will be discussing proteomics and protein analysis. Thank you for patiently listening to this lecture. Take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.